Good morning, class. Today I am going to teach you the chapter 9. The topic is work and energy. We do many types of work every day, but in scientific way, all the work is not called work done. All the activities that we perform is not called work. In the scientific term, when force pulled or push things to move in a certain distance, then we call work is done. हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे किसी चीज को उठाते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, बट दीज आर नॉट वर्क. इन द साइंटिफिक वे वर्क तब होता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जाता है और वो चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस करती है, कुछ डिस्टेंस तय करती है, उसमें मूवमेंट होता है, देन बेसिक वर्क इज डन. फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग अ बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर. एक बॉक्स को जमीन पे हमने यहाँ से वहां खिसकाया, देन आई सेड कि वर्क इज डन. अ हॉर्स पुलिंग कार्ट इज अ वर्क. एक घोड़ा गाड़ी को जो खींचता है, दैट इज कॉल्ड अ वर्क. When door is open is also called a work. When a child kick a ball, then we said work is done. But when we or you push a wall, but it does not move, so it means no work is done. अगर हम किसी दीवार को हाथ से धक्का देते हैं, वो अपनी जगह से हिलती ही नहीं है, बल्कि हमने उस पर बहुत सारा फोर्स लगाया, but it is not work done. Sleeping for many hours is also an example of no work done. Or you sit on a chair for an hour, so no work is done. ये एग्जाम्पल है काम न होने के. जब तक कोई चीज अपनी जगह से हिलती नहीं है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, उसमें डिस्टेंस नहीं तय होती, मूवमेंट नहीं होता, तब तक साइंटिफिक वे में कहा जाता है कि काम नहीं हुआ. नाउ एनर्जी. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. व्हाई वी नीड एनर्जी? वी नीड एनर्जी टू डू वर्क. Similarly, machinery, vehicles, generator, light bulb also transform energy into work. मशीन के द्वारा भी, vehicles के द्वारा भी, generators, light bulb के द्वारा भी energy ट्रांसफॉर्म होके वर्क होता है. Living things and non-living things and natural objects all are possess energy. For example, horse has the energy to drag a cart. A piece of coal has the energy to produce the heat, and stone has the energy to uproot the tree. A man walk correspond to one type of energy, and burning of coal correspond to another type of energy. Now, energy is a scalar quantity. These are the properties of energy. Energy is a scalar quantity, and energy unable to be touched. हम energy को छू नहीं सकते. It work shifts energy from one system to another. All forms of energy are associated with motion, and the SI unit of energy is joule. जूल में हम एनर्जी को नापते हैं. एनर्जी लाइट्स आवर सिटीज. एनर्जी पावर आवर व्हीकल्स, ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स. एनर्जी फॉर्म्स आवर होम्स, warms our homes, play our music systems, cook our food, and give us picture on television. Energy powers machinery in factories and tractors on a farm. Everything we do is connected to the energy in one form to the another form. Now there are two types of energy. First is
energy. Renewable energy is an energy that collected from a renewable resources which are naturally replenished on a human time scale such as sunlight, wind, rain, etc. And the non-renewable energy comes from sources that cannot be replenished into a short period of time. For example, fossil fuel, natural gas, coal and nuclear energy. These are not replenished in a short period of time. Fossil fuels, coal, natural gas को prepare होने में 100,000 of years लगते हैं. So these are non-renewable energy sources. Now I would like to conclude this video. If you have any problem, you can ask me. Thank you. In the next video, I will tell you about renewable and non-renewable sources of energy and types of renewable and non-renewable sources of energy. Now